Hello everyone, my name is Simran and I am going to teach you mathematics. Students, in our last class we have completed the exercise number 1 of 7 chapter, that is 7.1, and today we'll be starting a new exercise of this chapter, that is criteria for the congruency of triangles. Alright students, talking about the congruency of triangles, we have discussed in the last class that we can have the measures. Like sometimes it is very difficult from us to trace all the paper and to cut out the triangles to just determine the congruency. Alright, so that particular time we use the criteria and the measures to find if the two angles are congruent or not. तो हमेशा trace out करना या cut out करना एक अच्छा method नहीं होता, तो उन cases में हम कुछ criteria को, कुछ measures को follow करते हैं और उन measures को follow करने के बाद हम देखते हैं कि दो triangles congruent हैं या नहीं. So basically students, we can judge congruency in terms of appropriate measures. It would be quite useful. So firstly we will be talking about the first criteria, that is SSS criteria. Alright students, talking about the SSS congruence criteria students, it is all about SSS, that is side and side. So students, talking about this SSS criteria, if we want to have the congruency of two triangles, any two triangles we consider, और उन दोनों triangles के अंदर अगर हमें corresponding sides दोनों triangles की equal मिल जाएं, all right, तो वो दोनों triangle इस SSS criteria से क्या हो जाते हैं, congruent हो जाते हैं. All right students, have a look. If under a given correspondence the three sides of one triangle are equal to three corresponding sides of the other triangle, then the triangles are congruent. Alright students, have a look. If under a given correspondence the three sides of one triangle are equal to the three corresponding sides of another triangle, then the triangles are congruent. Alright students, have a look at these two triangles. This is triangle ABC and this is triangle RQP, whatever. Alright students, so in this particular side students, in these particular triangles, here we have a look. Firstly, this is side AB. The side AB, which is the line segment, is equals to 3.5 centimeters, and in this also we are having RQ's value 3.5, which is equals to RP. Why I am mentioning R first? Because R is like the single type. Alright, so it is RP. Next students, if I am talking about the 5 centimeter, then AC, students, AC is equals to 5 centimeter and this QR is also equal to 5 centimeter. So RQ, 5 centimeter, that is RQ. Next students, if I am talking about the third side, that is 7.1 centimeter, that is BC. If BC line segment is equals to 7.1 centimeters, then it is equal to this one, okay, what we call it as PQ. Alright students, have a look. By the SSS criteria, यहाँ पे देखिए हमने तीनों sides को correspondingly equal कर दिया, दोनों triangles के, of the triangle ABC and of the triangle RPQ. Alright students, so इस criteria से हम दोनों triangles को congruent prove कर देते हैं. Alright, so by this way the triangle ABC is congruent to the triangle RP and Q. Why RPQ? Why not PQR? Why not QPR? Because students, the corresponding parts must be written according to that. Alright, so जो A के साथ correspond कर रहा है वो है ये वाला R, because यहाँ पे A है तो यहाँ पे R है, यहाँ पे B है तो यहाँ पे P है, और जहाँ पे C है वहाँ पे क्या है, Q है. तो correspondingly हम देखते हुए ये चीज़ लिखते हैं. Alright students, so we'll be discussing the examples based upon this criteria. Firstly students, the first example is in triangle ABC and in triangle PQR, right? AB is equals to 3.5 centimeter, BC is equals to 7.1 centimeter, AC is equals to 5 centimeter, PQ is equals to 7.1 centimeter, and QR is equals to 5 centimeter, and PR is equals to 3.5 centimeters, right? Examine whether the two triangles are congruent or not. If yes, write the congruence relation in symbolic form.
Alright students, so in this question we have to mention whether these two triangles are congruent triangles or not. Alright, and by which criteria. Firstly, students will be considering these two triangles. Alright, so in triangle ABC and triangle PQ and R, right? Firstly, you have to write this as such, okay? You don't need to find the correspondence. Firstly, just write it as it is, as written in the question, right? Now look at the measures. Firstly, the side AB, the line segment AB is equals to 3.5 centimeters, which is equal to this 3.5 RP. R because single, okay? So RP. Next, students will be talking about 5 centimeter. So AC is 5 centimeter and RQ is also 5 centimeter. AC and RQ. This is equal to 5 centimeter. Next is 7.1 centimeter, right? So 7.1 is BC. So this BC is equals to PQ. PQ. Alright students, have a look now. By the SSS criteria, because side of two triangles are equal, the corresponding sides of two triangles are equal, so it means that these two triangles are congruent according to which criteria? According to side criteria. So students, write it like that. So by SSS criteria, triangle ABC is congruent to triangle. Which triangle? Now tell me which triangle. Will not write PQR, because PQR was the thing that was initially written. Now we have to write according to the corresponding condition, because we have to write in the symbolic form. So it will be A is corresponding to R, B is corresponding to P, and what is left? Q. So these two triangles are congruent. So the triangle ABC is congruent to triangle RPQ, and this is your first example. Looking at the second example, students, what is that? In figure AD, what is AD? This is AD, right? And this is CD. AD is equal to CD, AB is equals to BC or CB, right? So state the three pairs of equal parts in triangle ABD and triangle CBD, right students? अब हमें दे रखा है कि ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं और ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं. तो अब हमें बताना है कि if you are talking about these two triangles, like what triangle? Triangle ABD in the first triangle and in the second triangle CBD. So we have to tell the three parts that are equal, the three pairs of equal parts in this particular triangle. So students, in triangle ABD and triangle CBD, firstly two things are given to us, that is AD is equals to CD, right? So we are given that AD is equals to CD. It is given to us. Look here, given. This thing is given to us. Next, AB is equals to CB, right? This is also given to us. Have a look students. Now this is the common side. ये तो दोनों में common आ रही है ना. This third side is the common side of these two triangles. Because अगर एक triangle ये बन रहा है, ध्यान दीजिए, अगर एक triangle ये बन रहा है और दूसरा triangle ये बन रहा है, ये हमें बोल रखा है इसके इक्वल है, ये हमें बोल रखा है इसके इक्वल है, लेकिन ये जो ये वाली साइड है ये तो दोनों में कॉमन ही है ना. तो अगर कोई साइड कॉमन है तो वो तो आपस में इक्वल होगी. सो द थर्ड साइड, दैट इज द साइड DB. DB is equals to DB, right? Which is common side. So students, by this we mean that in these two triangles, three pairs of the sides are correspondingly equal. So it means that we can say that these two triangles are the congruent triangles, right? So it means that these two triangles are congruent triangle by which criteria? By SSS criteria. Alright students, look at the next part. That is triangle ABD is congruent to triangle CBD?
why or why not? We have just discussed that there are three sides correspondingly equal, so it means that these two triangles are congruent to each other, and by which criteria? By SSS criteria. So write it like that. Yes, triangle ABD is congruent to triangle CBD because of SSS criteria of congruency, right? You have to mention it. Congruency of triangles. Alright students, this is your first part. Alright, looking at the next question, the third part. Does BD bisect angle ABC? Give reasons. So अब हमें बताना है कि जो साइड BD है, BD साइड जो है मीन्स दिस थर्ड साइड, क्या ये थर्ड साइड जो है वो कौन से एंगल को बाइसेक्ट कर रही है? एंगल ABC. एंगल A, B एंड C मीन्स दिस, ये जो कंप्लीट एंगल है बोला जा रहा है कि क्या ये जो साइड है ये इसको बाइसेक्ट कर रही है, हमें ये बताना है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो मतलब अगर ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है तो वी हैव टू टेल इफ द साइड BD इज बाइसेक्टिंग दिस, मतलब इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है. बाइसेक्शन का मतलब यही तो होता है ना कि एक साइड या एक लाइन किसी एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करी है. सो इसके अकॉर्डिंग एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल होनी चाहिए ना, राइट? तो अब यहाँ पे दीजिए, देख लीजिए स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई भी दो ट्राइंगल्स कनकरेंट हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं, हमने भी पढ़ा था, राइट? तो उससे हमें पता लगता है कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल हो जाते हैं. सो हमने अभी बात की कि ABD और CBD, राइट? अभी हमने बात की थी कि ABD और CBD जो ट्राइंगल्स थे दोनों कनकरेंट थे, राइट? सो दीज टू ट्राइंगल्स वर कनकरेंट. सो if these two triangles are congruent then it means that ABD and CBD ये दोनों एंगल्स भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो ये चीज़ हमने कैसे प्रूव की? बाय द रीजन ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स वी हैव टू राइट दैट BD bisect angle ABC because what is this angle students? ABD. Angle ABD is equal to angle CBD, right? This angle is equal to CBD because these two angles are equal, and we know that triangle ABD is congruent to triangle CBD, right? So this is equal by CPCT. CPCT क्या होता है स्टूडेंट्स? मैं अब आपको बहुत आराम से बता रही हूँ और आप ध्यान से सुनिएगा. CPCT इज कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ congruent triangles. ओके, अगर हमें पता लग जाता है कि कोई दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम उसके अंदर के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल कर सकते हैं. लाइक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सारे के सारे इक्वल हो जाते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सभी के सभी इक्वल हो जाती हैं, वर्टिसेस इक्वल हो जाते हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो हमें बाय CPCT अगर पता लग जाए कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं बाय CPCT. ऑलराइट स्टूडेंट्स, लुकिंग एट द नेक्स्ट क्राइटेरिया दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द criteria SAS. SAS by its term means side, angle and side. First is side, next is angle and third one is also side. So students, if we are considering any two triangles and if we want to check the congruency of those two triangles, then by this criteria, by the criteria SAS, we can also have the congruency of the triangle. How? Because in this particular congruency we have to take care of the thing that in the corresponding parts we have to mention any two sides and the sandwiched angle between these two sides. For example, have a look. If I am talking about this side
and this side. And if in this triangle, if I'm talking about this side and this side, if this side is equal to this side and this side is equal to this side, so the angle that is following this criteria must be the sandwiched angle between the two sides. जो भी आप दो साइड्स कंसिडर कर रहे हो ना, उनका सैंडविच्ड एंगल होना चाहिए. सो दिस एंगल एंड दिस एंगल, द एंगल शुड बी दिस वन. ओके, अगर हमें किसी जगह पे बोल रखा है स्टूडेंट्स कि ये एक ट्राइंगल है और ये एक ट्राइंगल है, राइट, जिसमें ये साइड इस साइड के बराबर है और ये साइड इस साइड के बराबर है, और एंगल कौन सा इक्वल दे रखा हो, हमें ये दोनों एंगल्स इक्वल दे रखे हो, तो क्या हम उस केस में इसको बोल पाएंगे कि बाय एसएएस क्राइटेरिया ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है? नो, बिकॉज ये दोनों साइड्स हमें इक्वल बोल रखी हैं, तो इन दोनों साइड्स के अंदर का सैंडविच एंगल कौन सा बनेगा? ये वाला. इन दोनों में भी कौन सा बनेगा? ये वाला. तो होना तो ये इक्वल चाहिए ना, लेकिन दिया कौन सा हुआ है? ये दिया हुआ है. तो बाय इस क्राइटेरिया से इस क्वेश्चन के अंदर ये क्राइटेरिया फॉलो नहीं होगा और इस क्राइटेरिया के थ्रू दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं प्रूफ होंगी. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है. सो इस क्राइटेरिया में क्या है स्टूडेंट्स? इफ अंडर अ कॉरेस्पॉन्डेंस two side and the angle that is sandwiched or included between them, what is them? The sides that are given to us, the equal sides between them of a triangle are equal to two corresponding sides and the angle included between them of another triangle, then the triangles are congruent. Alright students, just have a look at the example. ये दोनों triangles दे रखी हैं, इसमें ये साइड इस साइड के बराबर है और सेकेंड साइड के बराबर है, राइट. और एंगल जो है इन दोनों का बीच का एंगल है ना, एंगल इंक्लूडेड है इन दोनों साइड्स के अंदर, तो अगर ये एंगल भी इक्वल है और ये दोनों साइड्स भी इक्वल हैं, तो इट मीन्स कि हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स भी इक्वल आ रही हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज योर criteria SAS. So by this we can say that the triangle ABC is congruent to DEF. Alright students, looking at the examples that are based upon this criteria, that is SAS congruence criteria, is example number 3. Given below are measurements of some part of the two triangles. Examine whether the two triangles are congruent or not by using SAS congruence rule. If the triangles are congruent, write them in symbolic form. You have to write them in symbolic form and you have to check whether the two triangles are congruent or not. Alright students, so we are given with the two triangles, that is the first triangle, the second triangle, right? So firstly we'll draw the triangle ABC, A, B and C, where the side AB is 7 centimeter, AB is 7 centimeter. All right, side BC is 5 centimeter, BC is 5 centimeter. Have a look, AB 7, BC 5, and what about the angle B? 50 degree. So angle B is 50 degree. All right students, and in this particular triangle, the triangle given is DEF. Firstly, we don't have to write the vertices. Have a look, we are given the angle E. Angle E is 50. So write it firstly like DEF. Angle E is 50 degree. All right, DE is 5. DE is 5 centimeters, right students? And EF is 7 centimeters. EF is 7 centimeters, right students? Now you have to check the congruency. All right students, so firstly in triangle, पहले हम जैसे मर्जी लिखे, कोई मतलब नहीं है कि हमें कैसे लिखना है. So firstly in triangle ABD, ABC and triangle DEF. Firstly we are talking about the sides. So side is students AB. AB is equals to EF. Alright students, FE. The side AB that is 7 centimeter is equals to side FE. Alright, अगर मैं यहाँ पे एंगल B की बात करूँ तो एंगल B 50 डिग्री है और यहाँ पे एंगल E 50 डिग्री है, तो मतलब यहाँ पे तो कॉरेस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स होंगे, वर्टिसेस होंगे, वो B और E होंगे. तो जहाँ पे B लिखूंगी मैं उसके अकॉर्डिंगली E लिखूंगी. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये दोनों इक्वल क्यों हैं? क्योंकि ये 7 सेंटीमीटर्स ईच है. ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी आर टॉकिंग अबाउट द 5 सेंटीमीटर साइड. सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द 5 सेंटीमीटर, देन दिस BC which is equal to this
EF, this ED, all right students, BC and ED, all right student, this is 5 centimeter. अब हमने दोनों एंगल्स तो ले, अब दोनों साइड्स तो ले लिए, अब इनके बीच का एंगल, मतलब द एंगल दैट इज इंक्लूडेड बिटवीन दीज टू साइड्स, दैट इज एंगल B इज इक्वल टू एंगल E विच इज इक्वल टू 50 डिग्री. अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये एंगल, ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड, और इन दोनों साइड का इंक्लूडेड एंगल है ना 50 डिग्री. सो इट मीन्स दैट बाय द क्राइटेरिया SAS ये कॉन्करेंसी होल्ड कर रही है और ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्करेंट ट्राइंगल्स हैं. ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो वी हैव टू राइट इट लाइक दैट. सो बाय, सो स्टूडेंट्स वी हैव टू राइट इट लाइक दैट. By SAS congruency criteria, all right. So by SAS congruency criteria, students, we mean that these two triangles are congruent. Which triangle? If I'm talking about triangle ABC, then it is congruent to, firstly, B और E का एंगल सेम है तो E तो सेंटर में आएगा, right? E तो सेंटर में आएगा, ये पता लग गया. अब आगे पीछे देखना है कि DF आएगा, ठीक है, D और F आएगा, या फिर क्या आएगा, F और D आएगा, ये देखना है हमें बेसिकली. तो अगर यहाँ पे मैं ले रही हूँ A, तो A के सामने मैं क्या ले रही हूँ, F. तो अगर यहाँ पे मैंने A लिया है तो यहाँ पे क्या लूँगी मैं, F, और यहाँ पे C है और यहाँ पे क्या है, D. सो स्टूडेंट्स, इस तरह से सिंबॉलिक फॉर्म में हमने दोनों ट्राइंगल्स को लिख लिया और इससे हमें पता लगा कि ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं ये आपस में कौन से हैं, ये दोनों आपस में कॉन्करेंट ट्राइंगल्स हैं. ऑल राइट स्टूडेंट्स, नाउ you have to write them in symbolic form and we have written that in the symbolic form. So these two triangles are congruent triangles. All right students, looking at the next example that we are going to discuss, that is example number 4. Given below are measurements of some parts of two triangles. Examine whether the two triangles are congruent or not by using SAS congruence rules. If the triangles are congruent, write them in symbolic form. All right, the similar question that we have discussed, students, SAS congruency rule we have to check. So firstly students, I'm talking about the triangle ABC, right? So by the triangle ABC, in this triangle AB is 4.5, AC is 4, AC is 4 centimeters, right? Angle A is 60 degree. And if I'm talking about this triangle DEF, okay, angle D is 55 degree. Have a look, D, E and F. Firstly students, angle D is 55 degree. This is 55 degree. DE is 4 centimeters. All right, and FD is 4.5 centimeters. अब स्टूडेंट्स हम ध्यान से देखें तो हमें क्लियरली सिर्फ इस क्वेश्चन को देखते ही पता लग रहा है कि ये कॉन्करेंसी क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रही, बिकॉज इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स तो इक्वल दे रखी हैं, लेकिन जो एंगल्स होता है, सैंडविच्ड एंगल जो होता है दोनों साइड्स का, क्या वो आपस में इक्वल है, नहीं है. एक तो 60 है, दूसरा क्या है 55 डिग्री है, तो मतलब ये कॉन्करेंट तो नहीं होंगे. बट कैसे लिखना है ये देखिए. सो स्टूडेंट्स, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, राइट स्टूडेंट्स, इनको लेने के बाद हम क्या लेंगे, अब हमें पता है कि एंगल A जो है वो नॉट इक्वल है एंगल D के, बिकॉज एक 60 डिग्री है और एक 55 डिग्री है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो AB है, लाइन सेगमेंट AB, वो DF के बराबर है, कितना है 4.5 सेंटीमीटर्स, राइट स्टूडेंट्स. नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो ये वाला साइड है AB, AC, ये DE के बराबर है और ये क्या है 4 सेंटीमीटर्स. अब हमें इन तीन चीज़ों से पता लग रहा है कि दो साइड्स तो इक्वल हैं लेकिन दो एंगल्स इक्वल नहीं हैं इनके बीच का, और हमें तीसरी साइड का भी कुछ नहीं पता कि क्या आएगी, राइट. तो इस तरह से हमें नहीं पता कि ये थर्ड साइड क्या है या रेस्ट ऑफ द एंगल्स क्या हैं. तो फिलहाल बाय SAS क्राइटेरिया ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्करेंट नहीं हो रही, क्योंकि हमें पूछा भी बाय SAS कॉन्करेंस रूल के अकॉर्डिंग था. सो बाय SAS क्राइटेरिया
by SAS criteria of congruency, these two triangles are not congruent. So you have to write this thing that these two triangles are not congruent. Alright students, looking at the next question, what is that? The question number 4. Given below are measurements of some parts of two triangles. Examine whether the two triangles are congruent or not by using SAS congruence rule. If the triangles are congruent, write them in symbolic form. Alright students, a similar question but the different measurements. Okay. So first students, the triangle ABC, A, B and C, and the next triangle. Alright. In the triangle ABC students, BC is 6 centimeter, this is BC and this is 6. AC is 4 and angle B is, what is angle B? 35 degree. And if I am talking about this DEF students, then angle E is 35 degree. Alright, DF is 4 and EF is 6. Have a look students, this is 4, this is 6, this is 4, this is 6 and this is 35, this is 35. So looking at this particular question, ये question बहुत से बच्चों को confuse करता है, तो इस question को ध्यान से देखिएगा. अब सबको नज़र आ रहा है कि एक angle equal है और दो sides equal हैं, तो मतलब ये दोनों triangles क्या होगी? Congruent होगी. लेकिन हमने क्या बात की थी कि angle जो equal होना चाहिए वो उन दोनों साइड्स का इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए. मतलब अगर मैं इन दोनों साइड्स की बात कर रही हूँ, ये वाली साइड और इस साइड की बात कर रही हूँ ना, तो इन दोनों साइड का इंक्लूडेड एंगल कौन सा इक्वल होना चाहिए था? ये वाला ना. बट डे कौन सा रखा है? सामने वाला. तो ये वो एंगल नहीं है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे बाय SAS रूल के अंदर. सो स्टूडेंट्स, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्करेंट नहीं होंगी. ओके, बट हमें लिखना है कैसा है ये देखेंगे हम. सो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, अब ये दोनों ट्राइंगल्स लेंगे और हम लिखना स्टार्ट करेंगे कि AC जो लाइन सेगमेंट है वो DF के इक्वल है क्योंकि ये दोनों 4 सेंटीमीटर्स हैं. ऑलराइट, AC एंड DF 4 सेंटीमीटर, देन BC और EF 6 सेंटीमीटर्स, ये भी इक्वल है. अब एंगल जो B है ये इक्वल दे रखा है एंगल E के, दैट इज 35 डिग्री. बट अब यहाँ पे हम ध्यान दें, दिस इज नॉट इंक्लूडेड एंगल ऑफ टू साइड्स. एंगल ऑफ द टू साइड्स. सो स्टूडेंट्स, बाय triangles SAS criteria of congruency, triangle ABC is not congruent to triangle DEF. So by this criteria of SAS हम इन दोनों triangles को congruent नहीं बोल सकते हैं. So this is our question number 4. Looking at the next part students, what is that? The question number 5, example 5. So students, in this particular figure, AB is equal to AC and BD is the bisector of angle BAC. So students, in this question it is mentioned to us that AB और AC आपस में equal है और जो AD side है वो bisect कर रहा है एंगल BAC को. मतलब BAC मतलब इस एंगल को जो AD साइड है वो बाइसेक्ट कर रही है. बाइसेक्शन का मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो एंगल 1 है ये एंगल 2 के इक्वल होगा. ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये तो हमें गिवन है क्वेश्चन में. तो क्या क्या गिवन है? गिवन है हमें AB इक्वल टू AC, राइट, एंड वी आर ऑल्सो गिवन दैट BAD एंगल इज इक्वल टू एंगल CAD. राइट स्टूडेंट्स, BAD इक्वल दे रखा है CAD के, बिकॉज हमें दे रखा है BD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC. ये दो चीज़ें तो हमें गिवन है.
अब स्टेट 3 पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स इन द ट्राइंगल ADB एंड ADC। अब हमें इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर के जो 3 पेयर्स ऑफ पार्ट्स इक्वल होने चाहिए ना, वो बताने हैं। तो हम ये दोनों ट्राइंगल्स कंसिडर करेंगे। सो इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC। ओके, अब इन दोनों ट्राइंगल्स में फर्स्टली स्टूडेंट्स हमें गिवन है कि AB और AC इक्वल है, ये गिवन है हमें, राइट। ये दोनों एंगल्स भी गिवन है कि ABD BAD इज इक्वल्स टू एंगल CAD, ये भी क्या है, गिवन है हमें। ऑलराइट, अब हमें बता रखा है कि ये और ये इक्वल है और ये एंगल इक्वल है। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, जो ये AD है, ये जो AD बन रहा है, ये भी तो इक्वल हुआ ना, दोनों ट्राइंगल्स के अंदर कॉमन चीज़ बन रही है, ये AD और AD। सो स्टूडेंट्स, AD इज इक्वल टू AD, ये क्या बन रहा है, कॉमन साइड है इन दोनों की, तो ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो 3 चीज़ें बतानी थी, 3 पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स बताने थे ना दोनों ट्राइंगल्स के, तो बता दिए। 2 तो गिवन थे, एक हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि ये तो कॉमन बन रहा है, तो अगर कोई चीज़ कॉमन बन रही है तो इट मीन्स कि वो तो इक्वल होगी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है, देखें। सेकेंड पार्ट है कि इज ट्राइंगल ABD एंड is triangle ADB is congruent to triangle ADC and give reasons। अब ध्यान दीजिए, हम by SSS क्रिटेरिया इनको congruent मान सकते हैं, क्योंकि एक ये साइड हो गई, एक ये एंगल हो गया और एक ये दूसरी साइड होगी, और जो एंगल है वो इनका इंक्लूडेड एंगल है। सो स्टूडेंट्स, वी कैन राइट yes, these 2 triangles ADB is congruent to triangle ADC by SAS criteria of congruency, criteria of congruency। all right students, looking at the next part, what is that, is B angle and C angle are equal। अब B और C क्या इक्वल होंगे, इसका रीज़न बताना है। अब हमें बता रखा है कि ट्राइंगल ABD जो है, ABD वो कॉन्ग्रुएंट है कौन से ट्राइंगल के, ACD के, राइट। अब ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट है तो स्टूडेंट्स C एंगल और B एंगल इक्वल होंगे ना, देखो सेकंड बन रहे हैं, ठीक है, तो ये इक्वल होंगे बाय CPCT। ओके, बाय CPCT। और CPCT क्या होता है, हमने पढ़ा है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ congruent triangles। all right students, so students, this was all about the 2 criteria that we have discussed today, that is SSS and SAS। in the next class we'll be going to discuss the next 2 criteria of this exercise। till then students, do practice hard, we'll be meeting in your next class। have a nice day, bye bye।